So today I'm going to teach you MCQs, which is PowerPoint Part 1. So start करते हैं. First question है, which of the following options represent the software that makes up a presentation program? किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाला सॉफ्टवेयर को दर्शाता है. सो ऑप्शन है MS Excel, MS PowerPoint, MS Word या Corel Draw. So the correct answer is MS PowerPoint. B option is correct. So move on. The next question is second question. Which one of the following is not a presentation graphics software? So इनमें से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है? सो ऑप्शन है MS PowerPoint, Adobe Reader या स्लाइड शेयर या की प्रिंटर प्रेजेंटर. सो द करेक्ट आंसर इज Adobe Reader. Third question is MS PowerPoint MS PowerPoint क्या है? So database management package, word processor, spreadsheet program या presentation package. So MS PowerPoint is a presentation package. The option is correct. Fourth question is the electronic page is any presentation is called. So presentation में electronic page क्या कहलाता है? Option है web page, slide, e-slide या e-page. So the correct answer is slide. Okay, B option is correct. So we are going to the next slide. Is fifth question. What type of clip is there in the clip gallery? So clip gallery में किस प्रकार की clip होती हैं? Pictures, video, sound, all of these. So yes, answer है all of these. ये सारे ही होती हैं. Next question is which of the following views is not available in PowerPoint? So कौन सा PowerPoint में उपलब्ध व्यू नहीं है? So ऑप्शन है outline, page notes, slide, shorter या note page. So the correct answer is C, page notes. Move on. The next question is seventh question. What is the print of the slide of a presentation called? So option है handout, footprint, booklet या image. So the correct answer is handout. Okay. Eighth question is which special effect was initially is added to used in the slide on the screen? So screen पर slide में initially कौन सा special effect में जोड़ा जाता है? So animation, templates, color scheme या translation. So option so correct answer है color schemes. Okay. Ninth question is the setting of the format set of pre-built text and color scheme is called. So pre-built text and color scheme के format के set को कहते हैं color scheme, templates, animation या presentation scheme. So the correct answer is template. C option is correct. 10th question is which of the following is a type of slide animation? So इनमें से slide animation का type है fly, from, flash, bounce, typewriter या all of the above. So the answer is all of the above. Okay. So 11th question is notepad, notes pen displayed in which of the following views? So note pen इनमें से किस व्यू में डिस्प्ले होता है? सो ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, नॉर्मल व्यू, A and B both या none of the above. So the correct answer is A and B both. So next question is the font character of slide can be charged
all in the presentation using in slide. So slide का यूज करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के फॉन्ट के कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है. किससे किया जा सकता है? सो थीम, मास्टर, आइकन या स्लाइड. So the correct answer is icon. So we are going to the next slide. Is 13 question. Which of the following speed is not available uh, during slide transition? So स्लाइड ट्रांजिशन के समय इनमें से कौन सी स्पीड नहीं होती है? तो ऑप्शन है फास्ट, मीडियम, स्लो या वेरी स्लो. सो करेक्ट आंसर है डी, वेरी स्लो. ये ऑप्शन नहीं रहता है. So 15 question is which button is pressed to go to the back slide in slideshow view? So, slideshow view स्लाइड शो व्यू के पीछे की स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं? So enter key, page up key या space bar या N key. So the correct answer is page up key. B option is correct. So next question is 15 question, and that is last question. Which button is pressed to end the slideshow? Slideshow end करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं? सो ऑप्शन है सिंगल की, कंट्रोल, ब्रेक या ऑफ डेप्थ या ऑल ऑफ दीज. So the correct answer is all of these. D option is correct. So thank you.